एक ही मुस्कुराहट पूछा, इतनी खुश क्यों हो? बेटा तुम पापा बनने वाले हो। संभव कूपन योजना में बीपीएल परिवारों को प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त सेवा मिलेगी। तो ले आया मैं कूपन गुलाबी, गर्भावस्था में सेहत की चाबी, चिंता अभी भूल जाओ, कूपन लाओ, कूपन लाओ, सेहत पाओ, कूपन लाओ। अरे समय जन्म का जैसे आया, हरा कूपन मैं लेके आया, प्राइवेट अस्पताल में जन्म खुशियों का लो मौसम आया। अरे फिर नारंगी कूपन लाया, टीके जांच सलाह सब पाया, माँ शिशु के लिए जरूरी, शुरू से हो चिकित्सा पूरी, कूपन लाओ, सेहत पाओ, कूपन लाओ। 2 बच्चों में 3 साल का अंतर, नीला कूपन है परिवार नियोजन का मंत्र। गुड़िया के साथ हुई फैमिली पूरी, एनएसवी की अब आई बारी। ओ भैया अपना समय गवाओ, संभव कूपन की मुफ्त सेवा पाओ। संभव कूपन योजना में बीपीएल परिवारों को प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त सेवा मिलेगी। आज ही अपने गांव की आशा से मिलो, कूपन लाओ और सेहत पाओ। Poor women are much less likely to use family planning and other health services related to pregnancy and delivery compared with women from a higher income group. Limited access to health services leads to higher fertility rates and maternal, neonatal, and child mortality and morbidity among the poor. Improving their access to high-quality family planning and reproductive health services is essential to the well-being of India's families and communities and the nation's development. The Sambhav Voucher scheme is one of the public-private partnership initiatives that has been implemented under the Innovations in Family Planning Services project funded by USAID, which works in close collaboration with Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and the state health societies in Uttarakhand and Jharkhand, and the State Innovations in Family Planning Services Project Agency in Uttar Pradesh. And the IFPS Technical Assistance Project implemented by Futures Group and partners provided the technical assistance to the respective governments in implementing the voucher scheme. This partnership that's been going on for over 2 decades now, the IFPS program, began with the simple goal of increasing access to and use of integrated reproductive health and family planning services, again, particularly for the poor and the most vulnerable in India. And 20 years later, it continues to contribute to improved health for millions of women in India and for the achievement of the Millennium Development Goals here in India. Particular focus of IFPS 2 and 3 was on public-private partnerships. The private sector plays a major role in delivering healthcare services, including to India's poor, and particularly in the 3 states of IFPS. One of these PPP schemes or models was the voucher scheme. Public-private partnerships are collaborations between the public and private sectors with clear, mutually agreed on roles, shared objectives, and specified performance indicators. Under these partnerships, the government monitors quality and reimburses providers for services delivered, while private providers deliver services at a negotiated reduced price. While poor people do not access services, those who do use health services often rely on the private sector. Therefore, the voucher scheme aims at making this option more affordable. Vouchers are a form of demand-side financing, a subsidy that places purchasing power in the hands of the beneficiaries, in this case, the poor. The scheme was piloted in 3 priority states, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and Jharkhand, covering 11 rural blocks in 3 districts and 368 urban slums in 1 city, with implementation time periods ranging from 1 to 2 years. बीपीएल जो फैमिली है जिसके पास की कुछ साल पहले कोई सुविधा नहीं थी, उसको हम कैफेटेरिया अप्रोच दे रहे हैं कि वो चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, चाहे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। अगर उसको लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लंबी है या उसको वहाँ पर समय लगता है, जैसा कि आजकल हो रहा है चिकित्सालय में, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना की वजह से भीड़ काफ़ी हो गई शासकीय चिकित्सालय में,
तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो हम उसी सरकारी खर्चे से उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। वो गरीब मरीज़ जो शायद खर्चे के डर से या बड़े अस्पताल के डर से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे या नहीं दिखाना चाहते थे, तो ऑब्वियसली ये स्कीम उनको तो पूरा फ़ायदा पहुंचा रही है। पहले जो बच्चे हुए 5 तो घर में ही हुए हैं, दाई से मतलब दाई बुलाई, खर्चा आया इसमें 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आया। मतलब पिछले साल की बात है, एक केस मेरे सामने आया था डोईवाला ब्लॉक का, तो उनको अपना मकान तक बेचने की नौबत आ गई थी कि हमें मकान बेचना पड़ेगा। लेकिन आशा ने जब बेनिफिशियरी को बताया कि तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी स्कीम है, उसके बाद जब आशा बेनिफिशियरी को लेकर अस्पताल में गई, जब हम लोग उस फैमिली से मिले तो हमें पता चला कि बीपीएल परिवार के लिए कोई योजना चल रही है, तो कितनी ज़रूरी है। परिवार नियोजन हमको पता नहीं था, इसीलिए हम उसका सेवा नहीं लिए। The voucher scheme was designed with the involvement of a number of stakeholders and continued throughout the project cycle. This helped to generate interest in participating in the voucher system. It also made sure that all partners were clear about their roles and responsibilities. The standards and procedure, package of services, reimbursement rates, and monitoring mechanisms were all determined through these consultations. The scheme was targeted to married women of reproductive age, pregnant women and infants from below the poverty line families. पहले तो हम उनका सर्वे करते हैं, हम मोहल्ले में जाके पता करते हैं, उनसे बताते हैं। इन्हीं में से जो लाभार्थी देखती हूँ कि जाने लायक हैं, उन्हें समझाती हूँ कि आप इस कूपन का प्रयोग करके जाएंगे तो आपका निःशुल्क सेवा मिलेगी। पहले तो हमें कोई जानता नहीं था, लेकिन अब हमें जानते हैं, समाज में पहचान है, अच्छा भी लगता है, मान सम्मान मिला है, थोड़े बहुत पैसे भी कमाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो मुझे बहुत ही मतलब कठिनाई हुई इस क्षेत्र में, लेकिन अब तो मैं ये कहूँगी कि मेरा ऐसा हो गया है कि लोग अपने आप ही मेरे पास अब आ रहे हैं, मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। The operational model of the voucher scheme involved the government health system led by the Chief Medical Officer, who also heads the Voucher Management Unit. In Agra, the Divisional Project Management Unit under District Innovations in Family Planning Services Project Agencies, or DIPSA for short, served as the Voucher Management Unit. In the other sites, NGOs filled the role of or supported the Voucher Management Unit. For example, Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust in Kanpur City, NGO Vikas Bharti in Gumla. The Chief Medical Officer's Office with the support of an NGO, Dharam Gramin Utthan Sansthan in Hardwar. The voucher management units are responsible for the day-to-day operations of the program. This includes coordination between partners, building links with the government system, quality assurance, communication and reimbursement of the vouchers. वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया एक चैनल में चलती है। सर्वप्रथम सिप्सा हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर वाउचर डूडा को देती है। रिक्वायरमेंट के आधार पर अपने असिस्टेंट वाउचर कोऑर्डिनेटर को देता हूं। असिस्टेंट वाउचर कोऑर्डिनेटर हर सीएचवी को इशू करता है जैसे उनकी आवश्यकता रहती है, और लाभार्थी सर्वे के दौरान, क्षेत्र भ्रमण के दौरान आवश्यकता अनुसार वाउचर कूपन देती रहती है। The project advisory group comprised of government representatives, NGOs, private medical facilities, training partners, ITAP and USAID. The group met regularly to review progress, monitor quality and resolve issues. The providers were selected based on a strict criteria that included their expressed interest, ability to offer the services under the scheme at the negotiated prices, quality offered according to the accreditation criteria, accessibility of the facility from the villages. Ongoing training in quality assurance and medical audits ensured that the standard of services offered was maintained. डिप्सा के ही माध्यम से उन्होंने पेपर में ऐड निकाला, उसमें नर्सिंग होम को एक सर्टेन क्राइटेरिया दिया। हमारी एक चेकलिस्ट है सिलेक्शन की,
और मिक्स उसमें गवर्नमेंट के डॉक्टर्स लेके, प्राइवेट डॉक्टर्स लेके, हमारी टेक्निकल एजेंसी ITAP को लेके साथ में मिल करके हम लोगों ने उस नर्सिंग होम्स को चेक किया और जो उसमें सूटेबल पाए गए हैं उनको सेलेक्ट किया। प्राइवेट सेटअप में पर्सनल टच के साथ वो जाती है, उसको सब चीज़ समझ में आती है। मतलब एक वाकई में जैसा एक चेकअप होना चाहिए वो एक प्राइवेट सेटअप में हो पाता है। The reimbursement rates for the providers were decided jointly. The number of participating private providers was limited to ensure that the lower negotiated rates were sustainable. This helped each facility to attract a sufficient number of clients to offset the lower prices. देखिए ऐसा व्यम नहीं होता है कि इनिशियली उनको फीस का एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है, तो उसमें कोई उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद जो है उसके जो वाउचर्स होते हैं वो जितना सर्विस प्रोवाइड करते हैं उतने वाउचर्स वो जमा कर देते हैं, उतना पैसा उसका माइनस हो जाता है। फिर वो जब पैसा उनका ख़त्म हो जाता है तो फिर उसका ख़त्म होने से पहले फिर उनको पे कर दिया जाता है। The package of services that the hospitals were going to offer was based on two factors: health needs of clients in the region and the willingness of the private providers to make those services available. In Agra, Kanpur Nagar and Haridwar, the package of services included antenatal care, institutional delivery, postnatal care, and clinical family planning services. In addition, women and the community health volunteers accompanying them for deliveries were given reimbursements to cover transportation costs. In Haridwar, complicated cases were referred to a higher institution, travel arrangements were also made, and the government reimbursed the hospital for the services provided. In Gumla, Jharkhand, the scheme focused on family planning services, including female sterilization, non-scalpel vasectomy, intrauterine contraceptive devices, injectables, oral pills, condoms, and the standard days method. The program also supported 2 full-time ambulances to provide transport to and from villages to the health facilities. The NGOs were responsible for training the community-level health workers, conducting monthly meetings to support them, facilitating community mobilization, and reporting to the Voucher Management Unit. Capacity building was central to the voucher scheme. Community-level workers were trained in improved interpersonal communication and behavior change. आशा ट्रेनिंग के लिए इसमें फोल्डर्स हैं और पिक्चर्स हैं, ब्रोशर है, जो पम्पलेट्स हैं। वीडियो बेस भी था कि उसमें दिखाया गया था एक कहानी बना करके, उसमें कहानी के माध्यम से उन आशाओं को दिखाई गई थी कि कैसे करके आपने जो है एक जिसको फ़ायदा मिलना है उसको आप कैसे मोटिवेट करोगे और कैसे इसकी आप पूरी जानकारी दोगे। गरीब आदमी को पैसों ही की दिक्कत होती है, अब वो इस कूपन के जरिए जाके अगर अपना इलाज करा रहा है तो वो तो खुश हो जाता है। ज़्यादा जागरूक होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इसमें काम करने वाली हमारी CHVs हैं, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स, वो लोग एक एक घर में जाके एक एक महिला से मिलके उनको सब समझाते हैं। Demand generation and behavior change communication were key to the voucher scheme. The campaign highlighted that high-quality service at private facilities for no cost was possible, thus also resonating with the brand Sambhav. The strategic approach to the campaign included communication at 4 levels. While the frontline workers made home visits and talked to the women and their families, messages were given through street theatre, video vans, interactive games, wall paintings, and other media. Mass media messages were relayed through TV, radio, and the press. नुक्कड़ नाटक में पता चला था कि नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी बताया गया था कि परिवार नियोजन की सारी चीज़। हाँ, नुक्कड़ नाटक रहे, अगर कोई नाटक रहे, लेकिन वह सब मुझे बताला। हम लोग नाटक में देखे हैं,
उसे हम लोग को यही अपना गाना गा के जैसे समझा के बोला कि ऐसा से ऐसा होना है, ऐसा ऐसा होना है, बोल के समझाया और किया तो हम लोग को थोड़ा समझ में आया। दीवार लेखन हुआ, उसके पोस्टर के द्वारा हुआ, फिर नुक्कड़ नाटक के द्वारा हुआ। इस तरह से हमारे गांव में इसका प्रचार प्रसार हुआ। The voucher system has an integrated monitoring and evaluation system in place to monitor progress, identify gaps and challenges, to use data for decision making and understand if the program is being impactful. असिस्टेंट वाउचर मैनेजर हैं, उनसे भी मैं वीकली प्लान मांगता हूँ। उसके साथ उनके वीकली प्लान के मुताबिक हम भी वहाँ दौरा करते हैं। साथ साथ हम जो हमारे नर्सिंग होम्स हम एक्रेडिट किए हैं उनमें भी जाके देखते हैं कि जिससे हमारी क्वालिटी की सर्विसेज हमारे क्लाइंट को प्राप्त हो रही है या नहीं प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ हम जब हमारे क्लाइंट सर्विस प्राप्त कर लेते हैं उनसे हम फीडबैक भी प्राप्त करते हैं। The Sambhav voucher scheme has resulted in increased recognition among the state-level policy makers of the value of partnering with the private sector to expand health services and reduction in the burden on public health system. The community-level health workers have felt empowered and the clients are satisfied with the services as well. The success of the pilot in Uttarakhand and Uttar Pradesh has led the state governments to take voucher scheme to scale. In UP, through SIPSA, the scheme has gone from 368 urban slums in one city to 1,562 slums in 5 cities, namely Kanpur, Agra, Varanasi, Allahabad and Lucknow. In Uttarakhand, from 2 blocks in 1 district to 5 districts in the first phase of the scale-up, and in the second phase of the scale-up, these private facilities in the 5 districts provided services to clients from the entire state. The Sambhav scheme made it possible for 12,500 babies to be delivered in private medical facilities, 47,600 antenatal care visits, 2,007 sterilizations, 1,744 intrauterine contraceptive devices, and 3,051 injectables. 76% clients were satisfied with the services offered and have reported feeling respected and appreciated the support of the community-level health workers. हम तो जा नहीं रहे थे, मुझको डर लग रहा था, मगर जब हम गए तो हमको कुछ ऐसा डर महसूस नहीं हुआ। वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं सब। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अस्पताल में, जैसे लग रहा था कि हम घर में। यहाँ देखभाल अच्छी होती है जी, इधर बहुत अच्छा है, देखभाल बहुत अच्छी होती है। यहाँ के सिस्टर डॉक्टर सब अच्छे हैं। This is quite a remarkable scale-up and a reflection of the power of the vouchers, which really increase the access of the poor to quality reproductive and maternal health services. At USAID, we're very proud that our partnership with the government, people, institutions in India has really been able to make such a difference in the reproductive health of women and their families in India. The results have been encouraging. The program leaves behind the capacity in the states to scale up voucher systems, train professionals who can manage and implement such public-private partnership models, and also leaves behind strengthened systems in place to monitor, modify and expand services. The Sambhav voucher scheme has also ensured behavior change among the beneficiaries towards positive healthcare and health seeking. जो अंत्योदय से नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए ये संभव वाउचर योजना एक रामबाण का काम कर रही है। जच्चा बच्चा की सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए कूपन लाओ खुशियाँ पाओ एक अच्छी योजना है। कूपन लाओ खुशियाँ पाओ। हरा कूपन मैं लेके आया, प्राइवेट अस्पताल में जन्म खुशियों का लो मौसम आया। अरे फिर
फिर नारंगी कूपन लाया, टीके जांच सलाह सब पाया, माँ शिशु के लिए जरूरी शुरू से हो चिकित्सा पूरी। कूपन लाओ सेहत पाओ, कूपन लाओ। 2 बच्चों में 3 साल का अंतर, नीला कूपन है परिवार नियोजन का मंत्र। गुड़िया के साथ हुई फैमिली पूरी, NSV की अब आई बारी। भैया अपना समय गवाओ, संभव कूपन की मुफ्त सेवा पाओ। संभव कूपन योजना में BPL परिवारों को प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त सेवा मिलेगी। आज ही अपने गांव की आशा से मिलो, कूपन लाओ और सेहत पाओ।